Okay, those who are seeing me at home, I've started recording now. So we are clearing the doubts of 8.3 today. Okay. So okay. So now 1 to 10 में sum number 7 you said, right? 8. 7 or 8? 8. Which the part, 1 or 2? First. Okay. Now the question is, man has 6 friends. How many ways he can invite more than one or more of his friends at dinner? और किसी तो का भाई माइक ऑन है? हाँ, किसी का माइक ऑन है, वो प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, तो मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ आपको. प्रीत जैन म्यूट. ओके. सो क्या है कि एक बंदा है जिसके पास कितने फ्रेंड्स हैं? 6 फ्रेंड्स हैं. ठीक है. हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट one or more of his friends? So let us see. फ्रेंड ए के लिए 2 ऑप्शन है, इसको बुलाएंगे या नहीं बुलाएगा. ठीक है. बी बुलाएगा नहीं बुलाएगा. There are 2 options for this guy. Same way, all of them, there are two options. All together 2 raised to 6, which is 64 options are there. But out of the 64 options, one option will be like do not call, no call, no call, no call, no call, no. ऐसा भी एक ऑप्शन रहेगा. If you remember different sequence of answer वाला sum, correct? You don't want this because he has to invite one or more. ठीक है. So these are all possibility. Okay. So therefore he can invite one or more in 64 minus 1 ways. Fair enough हो गया ये? So 1 to 10 में any other doubt? So can you explain why 64 minus 1? Yes, and sum number 3 and sum number 9. Because there could be one option in which he has not invited. No, this is also one sequence. What are the 64? There are 6 different sequence of answers are possible. मतलब yes, 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 yes एक option है. Yes, 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 no एक option है. Likewise, all together there are 64 options in which there will be option like no. मतलब he has invited none of them. So that you have to discard. Okay. 1 to 10 में any more doubts? So sum number 3 and sum number 9. बाप रे. Sum number 3 yes, is a doubt? How is that doubt? Which one? Yes, sir. Sum number 3 is subpart 4. Subpart 4. Okay. And which one sum number? Sum number 9. देख लेते हैं 9 पहले 3 कर लेते हैं. क्या दिया है? 5 times P4N equal to 6 times P5N minus 1. क्या पूछा है? Find N. Okay. Okay. So that's how the question is. ठीक है. So देखते हैं कैसे करते हैं. What do you mean by this? This means 4PN and this means 5PN minus 1. Is that okay, Aditi Guru Prasad? Yes, sir. Okay. So this will be 4 factorial divided by 4 minus n d factorial. Yes, बोल दे एक बार लाइफ में. Yes, sir. 6 times. Yes, sir. This will be 5 factorial divided by 5 minus of n minus 1 the factorial. Yes, बोल दो इसको भी. हाँ सर, ये भी बराबर है. Now थोड़ा अच्छे से लिखेंगे. So 5 into 4 क्या होता है? Sorry, 5 into 4 factorial क्या होता है? It's nothing but 5 factorial. So that and this will get cancelled.
Okay, and I will bring this guy on the other side. So once you open this, you will get 6 minus n the factorial. Is that okay with you? Why red pen? 6 minus n the factorial, the whole upon 4 minus n the factorial is equal to 6. ना आपने कभी लाइफ में सीखा है ये दोनों में बड़ा कौन सा है? लक्ष्य बोला क्या? लक्ष्य, who is bigger, this guy or this guy? लक्ष्य बोलता है सर जाने दो, मत पूछो, आईआईटी लेवल का सम हो गया. अरे गधे, यू डालो फाइ n इक्वल टू 3 एंड चेक ना कौन सा बड़ा है. n इक्वल टू 3 डालेंगे तो यू विल गेट दिस इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज नथिंग बट 1 फैक्टोरियल. तो ऑब्वियसली ऊपर वाला बड़ा है. तो रूल क्या है? लक्ष्य रूल क्या था? जो भी बड़ा है उसको एक्सपांड करो. Sir, can So you this tell can how be did you find out which one's bigger? Can you just say that, explain that? think about it ना बेटा. 6 minus n factorial का which is what? 6 minus n multiplied by one number lesser than this, which is 5 minus 1, 5 minus n multiplied by 4 minus n the factorial. Do you remember this? 8 Yes, sir, factorial yes, sir, can be written got as 8, 7, 6 factorial. ऐसे लिख सकते हैं ना? So Yes, sir. जो भी बड़ा है, or you can take n equal to certain value less than 4 and डालो 5 and check. So this will be nothing but n minus 1, sorry, 6 minus n, 5 minus n, 4 minus n the factorial over अभी ये भी उड़ा देंगे तो बचा क्या? बचा सिर्फ ये 6 minus n, 5 minus n is equal to, do you remember, do you want me to solve by smart method or by Gada method? Gada method is the quadratic. Do you remember the quadratic? n square minus 11n plus 30 is equal to 6 और 6 को उठा के इधर लेके जाने का और सॉल्व करने का. You can do it, no problem. एक्सपर्ट बनेंगे, होशियार बनेंगे अगर ये मेथड से किया. ठीक है, वेरी गुड. इंटेलिजेंट इधर से बनेंगे आप. By this can be written as 3 into 2, a product of two consecutive integer, sorry, natural number. ठीक है. So compare bigger one with bigger one, smaller one with smaller one. ये true होता है only if n is a natural number, तब भी ये true होता है. ठीक है. So when you compare, you will get n minus, sorry, 6 minus n equal to 3. Therefore, n equal to 3. Okay. What about this guy? 5 minus n equal to 2. Therefore, n equal to 2. n equal to 3. Agree. दोनों सेम है, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है. So final answer n equal to 3. ठीक है. You can solve any one and show. Okay. So this was your अदिति फालतू समझा यार. दिमाग घर पे रख के आई, ऐसा ऐसा कर रही है काम. छोटी ये हो जाना चाहिए था. Come to the 9th sum. ऐसे चिल्ला नहीं रहो, आप पूछ सकते हो डाउट, लेकिन आपने एफर्ट डाला है कि नहीं वो भी मैटर करता है ना बेटा. ओके, हाउ मेनी वेज 3 different rings can be worn in 4 fingers with at most, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 in each finger. ओके फाइन. सो अपने पास फिंगर्स है 1 2 3, अरे फिंगर ऐसे नहीं होता है, 3 and 4. ओके, 3 रिंगर. ठीक है, बराबर से. How many ways 3 different rings can be worn in 4 fingers? Okay, so ring A, B, C. चलो, बेसिकली इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? ए के लिए 4 ऑप्शन है. क्या बात है, परफेक्ट लड़का है तू यार. अभी अदिति बोलेगी बी वाली रिंग के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 3. नहीं, सच्ची बोल. उसके लिए 4 क्यों नहीं रहेगा? उसके लिए 4 क्यों नहीं रहेगा? So because the question says you can't have more than 1 ring in 1 finger. स्मार्ट क्योंकि अंगूठे पे नहीं पहनते. हाँ, 4 फिंगर भी दिया है ना इसके लिए.
सी के लिए कितने ऑप्शन है दीदी, ये बोल दे। 2. खत्म हो गया, चलो। तो So दीदी 2 ये आंसर तूने options घर पे नहीं सोचा क्या? because नहीं नहीं, हाँ ये घर पे नहीं सोचा था क्या? no sir, Okay. I was confused a little. ठीक है, चलो। नाउ यू टेल मी द नेक्स्ट चार्ट। 11 to 20 के बीच में कोई भी डाउट सर बोल दो फटाक से। यस सर 13th वाला। ओके, एनीथिंग एल्स 13 के बाद? सर वो क्वेश्चन 8-2 में we'll have to do it the same way we did the friends one ना? Yeah, but then how many different sequence of answers are possible, ऐसा बोला है। So in that case it will 2 raised to 8 only. It will be, हाँ yeah, without the minus one, yeah. -1, yeah. The 13th 11th answer. 11th one also? 13th का 5th part। 13th का 5th part, okay. 15th पे। 15th B, okay. No, Next 15th only, 15th। 15th only। 15 या करूँ या नहीं करूँ? कर दो। कर दो, okay. Anything else? सर नेवर टुगेदर नहीं सुनना था सर, कहीं भी अरे पूछते सिखाया है नेवर मैंने। 20 बोला सेकंड का तुमको कौन सा? सेकंड वाला सर, 20 सेकंड का 20 सेकंड, सेकंड है, up to 20 में से बोलो बेटा। up to 20 तो नहीं है सर। So 19th का third part. 19th का third part, okay fine. So is that all? Okay, चलो let's go ahead. क्या बोला है बेटा? Can you read the question 11th वाला? Can you मतलब who has the doubt 11th one? So I do. Okay, बोलो बेटा क्या डाउट है? So it's a figure. Okay. हाँ The मैं बना रहा adjacent हूँ यहाँ figures पे। to be the adjacent figures to be colored using 3 different colors. In how many Okay. ways can this be done if no 2 adjacent triangles have the same color? Okay fine, ठीक है। So 3 colors. Okay, so color से red, blue and green ले लेते हैं। Okay, so ये triangle को wait, what is the question? The adjacent figure is to be colored in the central triangle is to be colored, can be colored in 3 ways. Okay fine. So ऐसा नहीं बोला कि number of ways. I mean usually I can color this as red, ठीक है, and if I color this as blue and blue, I require only 2 colors, right? So question में confusion यहाँ पे होता है कि do I have to do this? This is the number of I can save my खर्चा of green color, but they are not saying this. What they are saying is that even if this is green, this is also fine. Okay, so the question is more tedious than it looks. Let's see. So first we'll try to color the middle वाला triangle. So उसके लिए कितना कलर है? इसके लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? तो सेंट्रल वन, इसके लिए कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शंस है, ठीक है। Once you color 3 for this, इसके और इसके लिए कितने ऑप्शंस है? इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? 2, 2, 1. इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? 2 options। इसके लिए कितने ऑप्शन? 2 ओके, सो ये कितना हो गया? 8 3 24। Okay, it's different than what other sums are there. So how ठीक है। will you have 2 options in the last one? We'll have 2 options in last one also, beta. So you will be using Suppose if we use red one for the central one. Now इसको मैं ग्रीन भी दे सकता हूँ, ब्लू भी दे सकता हूँ ना बेटा। इसको ये जो है उसको मैं ब्लू दे दूं, इसके लिए भी ब्लू दे दूं, इसके लिए भी ब्लू दे दूं।
या फिर इसके लिए ग्रीन भी दे दूं, इसके लिए ग्रीन भी दे दूं, इसके लिए ग्रीन, still none of them will have, no adjustment will have the same color, right? Yeah, I got it. So Thank how you. do we write this? Find this. Okay, we multiply Right them and we this. find the answer. No, right. Right के लिए लिखने का, first central one will be colored in 3 ways, and then remaining then will be having a remaining each triangle will have two options each. ठीक है, let's go ahead for the, this was 11th तो वो one, I'm लिखने sorry. के बाद ऐसा छोटा डायग्राम बना सकते जैसे समझ में आ Yes, जाए। yes. Let's go ahead for 13th one. 13 में, अरे बाप रे, I hope ये अदिति नहीं पूछ रही है. अदिति, are you asking these questions? No, sir, it's not me. Sir, me 13 का 5th part. Only 5th part. Okay, great. Yeah. So it's the same sum as that of the previous one. 15p r minus 1 upon 16p r minus 1 is equal to 3 upon 4. Question is find r. Okay. Okay, so do you know the mathematics here? This is nothing but 15 factorial over 15, sorry, 15 minus r minus 1 the factorial multiplied by 16 factorial, and this will be 16 minus r minus 1 the factorial is equal to 3 upon 4. न्यू स्टूडेंट्स को आइडिया तो आ गया रहेगा. एनपीआर का ये फॉर्मूला होता है, NPR is n factorial over n minus r the factorial. We have derived and we have kept it in the video also, so will not have any doubt in this. Okay, so when you open this, this will be nothing but 15 factorial over, this is nothing but 16 minus r the factorial multiply by 17 minus r the factorial divided by 16 into 15 factorial is equal to 3 by 4. Hey, 15. Factorial. Yeah. अरे भाई mistake यार छोटी यार mistake रे. Okay, so now what you can do, this and this will also get cancelled. You'll get 4 you keep it that, so it will be 12. So I will get 17 minus r the fact. लक्ष्य कौन सा बड़ा है बेटा? 16 minus r the factorial is equal to 12. So how did that 5 factorial come? 5 नहीं है, 15 है. Yeah. Which one here? It was 15. कहाँ से आया वो? अरे यार 10 factorial I can write it as 10 into 9 factorial है ना यार बेटा. So 16 factorial I can write it as, अरे अच्छे से लिख, what is happening? 16 into 15 factorial and so on. ठीक है? So 12. Okay. Now ये दोनों में बड़ा कौन सा है वो बोलो. सर ऊपर वाला बड़ा है. 17 minus r. So you can write this 17 minus r multiplied by 16 minus r the factorial over 16 minus r the factorial is equal to 12. So what will be left is 17 minus r is equal to 12, therefore r equal to 5. Thank you, sir. Okay, so this was 13th का 5th. ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया. Now let's go for 15th one. कुछ इंटरेस्टिंग सम नहीं आया अभी तक, but anyway, ये सब पॉपुलर लेवल के सम थे. You should have got it. Okay, चलो बोलो next. How many 3-letter words can be formed using the letters of the word in above problem 14 with no letter repeated? Oh, this is very easy, yeah. Which one you want me to do? 15 में से? I didn't get the whole Hexagon कर दूं? हाँ?
हाँ सर हेक्सागन कर दो. अच्छा, HEXAGON. Okay. How many 3 letters word can be formed? So I want to form only 3-letter word by using the letters of the word in a problem number 14 with no letter being repeated. Okay. So इसके लिए कितने options है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसके 7 into 6 into 5. wash your hand. हाँ, इसके लिए 7 options है. इसके लिए कितने options हैं? 6. 6. इसके लिए कितने options हैं? 5. माँ कसम ये नहीं आया मेरे को. छी. 210 sir. हाँ, वही लिखा मैंने. Next. सर एक मिनट सर ये 19. हाँ लिख लो. इसमें क्या लिखने जैसा रखा है मैंने? 19th sum. 19th का कौन सा पार्ट है? तीनों नहीं आया क्या? सेकंड पार्ट रिंग इट एट लीस्ट 3 फ्लैग्स. सेकंड पार्ट ये हम लोग ने किया था ना? हाँ किया था उस दिन, लेकिन वो सर वो डायरेक्टली था जैसे 3 फ्लैग्स 2 फ्लैग्स, इसलिए. क्या बात कर रहा है? ठीक है देख लेते हैं. चलो. So at least 3 Read the flags. question. 3 flags का one was easy adding at the at least 3 flags. Calm down, boy. Take a deep breath. Okay. Chalo. Find a number of different signals can be formed by using 6 flags of different colors. Okay. Okay. Posted one below the other using at least 3 flags. So we want to talk about at least 3 flags. ये किया है मैंने. हम टोटल में से एटमोस्ट निकाल देंगे ना? नहीं, एटलीस्ट 3 फ्लैग्स मतलब कम से कम 3 फ्लैग्स वाला आपको ये बनाने का है. तो ये मैंने सेम सम किया था लास्ट टाइम पे. इफ यू रिमेंबर, आई लेट मी जस्ट गो थ्रू इट. वेयर आई हैव डन दैट. सर वो 8.2 का 24 सम था. लुक एट दिस. नो, दिस वन आई हैव डन दिस while teaching. With the same somebody asked me in the homework also, doubt also. So वो मैंने वो टाइम पे नहीं किया था. Anyway, so you are not looking at what we have done, what has been taught, huh, Pranit? Okay. So I want to show at least 3 flags. मतलब क्या कम से कम 3? So I can have 3 flags, 4 flags, 5 flags, और all 6 flags. और इसको ऐड करना है. 3 flags के लिए फर्स्ट फ्लैग के लिए I have 6 ऑप्शन, सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए 4. बराबर से 4 फ्लैग्स के टाइम पे I will have 6, 5, 4, 3. Likewise. So इसको आप ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं. This is 6p3, 6p4, 6p5 and 6p6. Because you have 3 places and you have 6 flags. So you want to arrange 3 flags out of 6. This can be done in 6p 3 ways. Add करना है. Okay. Whatever is the answer, I am not interested in answer. ठीक है. So can you solve 16 का first part? Okay. So sir, in this question only, हाँ बेटा. the one with any number of flags, we'll just have to add the 2 flags and the 1 flag partner to this. Any number of flags, 6p1, 6p, हाँ correct, 6p2 add करके इसके साथ add कर दो, that will be the answer. बहुत अच्छा boy. ठीक है. Thank you. Very nicely worded. 16th one. Yeah, boy, question. Yes, so 16 first part. Yeah, read the question. How many numbers consisting of 5 different digits can be made from the digits 1 to 9
Okay. if the number must be odd. ऑड नंबर चाहिए, 1 to 9 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं? 5. How many odd numbers are there? 5 options. Once you fix this, digits are repeated बोला है, नहीं बोला है, कुछ बोला है? Different digits. Different digit बोला है. तो obviously now I have how many options I have for this guy? 8. Then 7. then 6. 6, 5. बहुत अच्छे, excellent, क्या बात है? इसका second sub part है. This is the first sub part. The second sub part क्या बोलता है बेटा? First The two first digits two should be digits. even. 5 digit चाहिए, वापस से same, and odd number चाहिए. तो इसको हम लोग डालेंगे कितने ऑप्शंस में? 5 ऑप्शंस में. अभी इसके लिए कितना ऑप्शंस है? फर्स्ट 2 digit has to be even. Four. सर बट लास्ट वाला डिजिट ऑड नहीं होना चाहिए. वो नहीं इसके लिए 3. ठीक है. नाउ कि ऑड होना चाहिए ना, कुछ बोला है क्या? नहीं लास्ट वाले डिजिट के लिए नहीं बोला है. कुछ नहीं बोला है. ओके फाइन. सो नाउ 4 and 3. Once you get 2 numbers out of this, we'll be having a 7 numbers, 6 number and 5 numbers. Is that understood? Yes sir. Because देखो ये 2 even number ले लिए, उसके बाद I will be having 5 odd and 2 even for this place. Will compete for this place, so that means that can be done in 7, 6 and 5 ways. Okay. Now let's go ahead further for solving doubts of sum number 20 to 32. So I had a doubt in 20 का third part. I have a doubt in 25. 23rd, 25, 24 भी है. Yes. ठीक है, 20 कर का लेंगे. third part sir. 32 भी है. 32 नहीं है. 22nd part. 22nd भी है, मतलब सब 29, प्लानिंग कर रहे हैं. Second part. Only the second So part. 29. 29, 32. 32, 20th second part. 20th. Yeah. Okay. I got Okay. an मतलब मुझे आंसर आ गया, but I thought that we could, like, I tried it a different way, but like I have a doubt. I'll tell you when it. Okay, no problem. I'll clear it out. 20, 22, 23, 24, 25, 29 and 30. बस इतने ही है. बाकी थोड़े नंबर बच गए बेटा, डाल दो वो भी. नहीं सर, बाद में हम लोग नया क्या पढ़ेंगे? आज कुछ नहीं पढ़ पाएंगे अगर ऐसा करेंगे आप तो. हाँ. Now listen to me बच्चा. क्या हो गया? ये क्या है? What happened? अच्छा, sorry. हाँ, तो let's work on this. Okay, sum number 20. Somebody read the question here. In how many ways can 8 books be arranged on a shelf if 2 particular books must occupy the ends? Okay, so how many books we have? 8 books. Correct. इसमें एक बुक है A और एक बुक है B. इसको बोलते हैं पर्टिकुलर बुक. जैसे सोहम और उसका A गर्लफ्रेंड, एंड उसको एंड पे रखने का है. तो फर्स्ट बुक को, ए वाली बुक को यहाँ पे रखो. उसके लिए कितने ऑप्शन सर? एक ही बुक है. सेकंड वाली बुक को यहाँ पे रखो. उसके लिए कितना ऑप्शन है सर? उसके लिए भी एक ही ऑप्शन है. रिमेनिंग 6 के बारे में कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है दो सर. है ना सर, 2 है ना. हाँ, फर्स्ट पे दोनों में से एक रख सकते हैं और लास्ट पे दोनों में से एक रख सकते हैं. हाँ वो मैं करता हूँ बाद में बेटा. 2 particular books must occupy at the end, right? ऐसा बोला है ना. अच्छा, okay, I got it now. Yeah. Okay. No, what I did So was that this I can wrote be two arranged three. in 6 factorial ways, and these two can interchange within themselves in 2 factorial ways. So the answer is 6 into 2 factorial. That's a 20th answer. I'll just take this with me.
ओके, सो हम लोग ने इसमें से 20 वाला तो उड़ा दिया है. चलो अभी और कौन सा बचा? 20 सेकंड. 20 सेकंड का somebody was saying only the second sub part, right? One girl was saying. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, so let us see the question, beta. Question क्या है? Even I have not read it. In how many ways can 5 children be arranged in a line so that 2 particular children are never together? बेटा ये नहीं याद है तेरे को? हम लोग ने किया है. I understood always together, but I didn't understand never together. Okay, so now all of you, those who have a difficulty in understanding never together, please pay attention. Suppose ये 5 children हैं, इन लोग को लाइन में लगाने का है. Now ये C और D हमेशा फाइट करते हैं बहुत. नहीं C D फाइट नहीं करते, B C फाइट करते हैं. B C का मतलब मालूम है ना? But anyway, let's not talk about that. Okay, so ये B C हमेशा फाइट करते रहते हैं. So we never want B and C together. Correct? So we do not want B and C together. तो क्या करते हैं? Do you remember the logic? What to do? If you don't want them together, throw them out. Never together, which means throw them out. Okay, so इसको बाहर निकाल दिया. ठीक है, तो बाकी के कितने बचे सर? 3 बचे. 3 को कैसे अरेंज करेंगे सर? 3 factorial ways. Now call those 2 guy. उसके लिए कितने ऑप्शंस बचे? एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर. बेसिकली 4 जगह बची है और मेरे पास व्यक्ति 2 ही है. So they can arrange in 4p2 ways. इधर बेटा तो obviously there is somebody in between. इधर बेटा तो भी कोई है बीच में. Likewise, basically if I choose this places for my B and C, I am sure that there is definitely one guy in between. A, D और E बीच में है. Okay, so for B and C, I will have 4p2 ways. So how will we write this? Okay, so first arrange A, B, and D. So first arrange. Let us see the particular person is B and C or A and B, whatever. Arrange the remaining. Arrange the remaining 3. This can be done in 3 factorial ways. And now there are 4 places left as shown in diagram. So that particular things, two things are never together, are not together, which can be filled in four P2 ways. Therefore, total task can be done in 3 factorial into 4p2 ways. ऐसा ठोक देने का. प्रॉब्लम सर डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं ना हम? हाँ, लेकिन लिखना जरूरी है. नहीं लिखेगा तो मार्क्स दे देगा. ये डायग्राम मेरे को समझ में आता है क्योंकि मैंने सिखाया है बेटा. तेरे टीचर ने ये नहीं सिखाया रहेगा तो है ना, वो एक डाइसी वस्तु हो जाती है बेटा. 22 is done. Now girls, you understood never together मतलब throw them out. So can we do all possibilities minus always together? In this case yes, but if there are 3 people, 3 never together, उसमें नहीं करेंगे. Okay. Usually करना नहीं चाहिए. Never together is a very strong statement. Never together means no two are together. बहुत ज़्यादा strong है वो statement. Now let's go ahead for sum number 23rd. बोलो भाई.
23rd. How many number of 6 digits can be formed? किधर गया? By using how many numbers 6 digits can be formed by using 0, 1, 3, 5, 7 and 9 when no digit is repeated, and how many of them are divisible by 10? Okay, this is very easy. Who has a doubt in this? भाया 6 नंबर हैं, आपको 6 डिजिट नंबर बनाने का है, तो obviously 0 will not come here first part. So 0 doesn't come here. So how many ways you can fill this guy? 10. हैं? थप्पड़ खाएगा, काय का 10? एक सेकंड 7. 5 ways. 5. One of them we have used. Okay. 5. How many ways we can use? We can fill this one for now. हैं? 5. 5. Then 4. Then 3, 2, and then 1. Oh my God, that was so simple. Let's see the second answer. Second part, how many of them are divisible by 10? So if the number you want divisible by 0, you understand this number is going to be 0 only ना. So उसके लिए एक ही ऑप्शन है, ठीक है? बाकी सबके लिए क्या ऑप्शन है भाई? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so that is very simple. 5 factorial 120 I think is the answer anyway. Let's go ahead. बहुत ही फालतू लेवल का सब स्टैंडर्ड सम था, प्लीज. ठीक है, 24 सम नंबर 24 में कौन सा वाला नहीं आया? 3 सब पढ़े बेटा. Adjacent वाला. कौन सा वाला? The 1, third 2 sub, और 3. find the number of ways in which all the letters of the word "imcot" can be arranged so that that no two vowels are adjacent. Second one में doubt. I have the doubt in the third one. Third wala, don't you think is the same sum as that of what we have done here? Okay. Who has a doubt in the second one? So नाम बोलो. no, I did the like मैंने 22nd में जो किया था ना, I did all possibilities minus 2 children which are always together for तो नहीं आएगा. 2 of them which are never. Yeah, I did that. नहीं आया. हाँ ठीक है. कौन सा वाला किया तूने ये? 20 मुझे तीनों सेम ही थे. I didn't get any. Okay, so now listen. So here I told you that there are two different. Yes बेटा. सर कोई वेटिंग पे है क्या? जरा चेक करो ना एक मिनट. मैंने तो ऑफ रखा है. वेटिंग तो ऑन रखा ही नहीं. I mean waiting to me is not there at all. Everybody can come anytime. Okay. तो बहाना बना रहा है. नहीं, वो एक न्यू स्टूडेंट थी, उसने ग्रुप में मैसेज नहीं देखा अपना लेक्चर का आज का, तो वो अभी ज्वाइन करने के लिए बोल रही है. Okay. Fine. So 24th. Read the question. First part में तीनों का concept सिखा देता हूँ. Do you want me to go through the concept again? I will go through the concept again. Yeah, this is the concept. ये इसने कैसे हो गया ये मेरे को आ गया भाई साहब. I can convert my handwriting into the text very easily. So good, no? It looks so nice. But anyway. શું છે? Okay. So I want to arrange 6 boys. क्या है nonsense? सर हाँ बोलो बेटा. एक नायर स्टूडेंट ज्वाइन किए, सरनेम उसका नायर है, एक बार उससे भी बात कर लो. न्यू स्टूडेंट है. Okay. तो बता दो क्या चल रहा है. Okay, let me just go through. Who is the Nair one? कौन है भाई नायर? Sir, that's me. I joined yesterday. हाँ नाइसा तो थी ना कल.
Naisa, you were there, no, yesterday? Yes, sir. Last class, she was there. होशियार बंदी है, टेंशन Yes, मत sir. ले. Okay. So 6 boys and 4 girls to be arranged for a photograph. Okay, are you all with me? Okay. Okay. How many ways this can be done if number 1, no restriction. मतलब कोई कहाँ पे भी खड़ा हो सकता है. ये 10 बंदे हैं, तो 10 बंदे को कोई कहाँ पे भी रह सकता है. ऐसे अरेंज करना है. That can be done in very simply 10p10 ways, 10 factorial ways. Now मेरी girls are very shy, so girls are always together. तो कैसे करते हैं? Consider group of girl, यहाँ पे ध्यान देना जरा. Consider group of girl as one person. ये 4 लड़की है, 4 लड़की को एक ही पर्सन कंसिडर करो, ये always together होता है. And remaining 6 are boys. All together there are now 7 people. These 7 people can be arranged within themselves in 7 factorial ways, and group of girls can be arranged within themselves in 4 factorial ways. Is that clear to you? Yes, sir. This was very much clear. Yes, The sir. next part was girls are never together. Now girls are never together मतलब क्या? Girls बाजू बाजू में रहती तो बहुत बात करती है. So I do not want any girl together. Any girl together नहीं बोल सकते. The correct way of saying is no 2 girls are together. No 2 girls are together. Or girls are never together. No 2 girls are together and girls are never together is the same thing. Okay. ठीक है. तो क्या करना है? तो गर्ल्स को उठा के बाहर फेंक दो. ऐसे एक्चुअली फेंकते नहीं है. And arrange the boys. 6 boys को अरेंज करो, नमूनों को. ठीक है. 6 boys can be arranged within themselves in how many ways? 6 factorial ways. Now call girls. How many places there for girls? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 places there. 7 places there and 4 girls say that can be arranged in 74 ways. This means what this answer gives you, girls are never together. मतलब एक भी नहीं, 2 लड़की भी नहीं, 3 लड़की भी नहीं, 4 भी नहीं, कोई साथ में रहेगी ही नहीं. देखो, look at the diagram. एक गर्ल इधर है तो एक इधर है. That means there is a boy in between at least. ठीक है. This was girls are never together. Now similar to this, there is a one question. All girls are never together. Now what is that? All girls are never together. Now what do you mean by this? All girls are never together means, bhai, I can have 2 girls together, I can have 3 girls together, but चारों की चारों साथ में नहीं चाहिए, बहुत बात करती है. ये चलेगा, ये भी चलेगा, but ये नहीं चलेगा. So this is exactly ulta of girls are always together, isn't it? So you do in this type, you do all girls are never together में आप ये कर पाएंगे बेटा. All possibility, that's this answer, minus girls are always together. ये कर पाएंगे when you have all girls are never together. However, there is a catch. If you have only 2 girls in the given question, then surprisingly or unfortunately, I must say, these 2 answers matches. Okay. So one student was saying that मेरे को वो सम आ गया वो मेथड से, ये सम नहीं आया, is because the number of girls have increased now. Okay. Going ahead. अरे बाप रे, बहुत बड़ा टॉपिक हो गया यार. ठीक है, let's see. How many ways 4 boys and 3 girls be seated? Seated so that no 2 girls sit together. Now no 2 girls matlab is the same as the girls are never together. बराबर से. Boy was getting confused. Never together समझ में आया. तो girls को उठा के बाहर फेंका. Arrange 4 boys. That can be done in 4 factorial ways. Now call these 3 girls. How many places are left? 5 places and 3 girls, 5p3. That's your answer, beta. This is the first subpart. Now let's talk about the next subpart.
Okay, how many ways 5 boys and 5 girls be seated in a row so that no 2 boys are sit together? 5 boys and 5 girls are sitting together so that no 2 boys are together. तो क्या करना है? बॉयज को उठा के क्या करना है? बॉयज को उठा के बाहर फेंक दो. Arrange girls. So girl, 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 girl. How many ways these girls can be arranged within themselves? So 6 factorial. Now call boys. How many places are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 places. And boys 7 है तो 6 है, so 76 ways they can arrange. Next, third subpart. So there are 5 girls. So why did you put 6 girls? Oh, I'm sorry. I misunderstood this. दिमाग में कुछ और चल रहा था. So this was 5 and this will be 6p5. I'm sorry. My mistake. Those who are watching at home. Okay. The number of the find the number of ways in with the letters of the word EAMCOT. अच्छा select EAMCOT. Okay. Can be arranged so that no 2 vowels are together. Vowels कितने हैं भाई? 1, 2, 1, 2 and 3 vowels हैं. तो पहले 3 consonants को arrange कर दो. 3 consonants can be arranged within themselves in 3 factorial ways. Now calls vowels back. 1, 2, 3, 4 vowels. 4 places. So 4p 3 vowels. Okay, got it. See, ये मैथ्स बहुत सिंपल है. एक बार बेसिक कांसेप्ट समझ में आ गया ना, वो जो मेरा पेज समझ में आ गया ना, फिर ये सब बहुत इजी हो जाएगा. Now let's go ahead. और कुछ बाकी है इसमें. Sum number 25 is pending. Sir, हाँ बेटा. वो same question में what if there were repeating vowels? हाँ, that we'll see that today बेटा. वो आज करेंगे. आज अगर टाइम मिला तो करेंगे क्योंकि डाउट्स इतने सारे हैं. ठीक है, डोंट वरी, हम लोग डाउट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेते हैं बेटा. एंड ऑल ऑफ यू नीड टू सबमिट द entire chapter of 8.1 to 8. नहीं, जिसका ये चैप्टर का जो भी होमवर्क दिया है वो सबमिट करने का है जानवी मिस को. ठीक है, आई विल बी सेंडिंग यू दैट एज अ होमवर्क. वो अल्टीमेट रहेगा. लक्ष्य तूने अगर नहीं किया ना तो फिर नेक्स्ट टाइम पे तो घर पे बैठेगा. ठीक है, ओके. लक्ष्य यार बोल नहीं रहा है, क्या हो गया? चुप हो गया एकदम. उधर बारिश हो रही है क्या? नहीं. ओके, 25th का फर्स्ट सब पार्ट है, सेकंड सब पार्ट है? जल्दी बोलो. दोनों सब पार्ट है. ओके, कैन यू रीड द क्वेश्चन? How many words beginning and ending with a consonant can be formed by using the letters of the word equation? So there are 8. It's an 8-letter word. Okay, so how many vowels are there? Sir, A, E, I, O, U. 5 vowels हैं. और कितने consonants हैं सर? 3. तो मेरे पास consonants है 1, 2 और 3 consonants हैं. I want a beginning and ending of this with the consonant. Okay, और बीच में कितने पब्लिक हो गए? सर बीच में 6 people हो गए. ठीक है, no problem. So beginning में vowel चाहिए, that can be done in 3. End में vowel चाहिए, sorry, beginning में consonant चाहिए, that can be done in 3 ways. End में consonant चाहिए, that can be done in 2 ways. ठीक है. Now remaining 6, because 1 consonant will be left and 5 vowels are left, altogether 6 people. So 6 letters can be arranged within themselves in 6 factorial ways. So that's your answer there. Now let us see the second sub part. How many different 5 letters vowels starting with vowel can be formed by using? Okay, ये तो easy है ना बेटा. You want how many different 5 letters vowels words can starting with the vowel. तो vowel से चालू होने वाले चाहिए और बाकी का कुछ भी रहने दो, फर्क नहीं पड़ता उनको. तो how many ways this place can be fixed? Sir 5 vowels है, उसमें से एक vowel चाहिए, that can be done in 5 ways. And remaining कुछ भी रहने देना, उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है. So
So remaining thing can be arranged within themselves in 7 factorial ways. Okay, sir. Okay, so that was easy. That's a 5-letter word. So that कितना 4 बोला? factorial होएगा ना 5 into 4 factorial. एक मिनट क्या बोला है? How many 5 letters words? Okay, sorry 5 letter बोला है. So ये हो जाएगा 4 factorial आ जाएगा बेटा. Answer is 1. I have not read that 5 letter words. Okay. Okay, some number अभी 29 पे जाएंगे सीधा. Finally, exercise about to come. Okay. Oh, बहुत ही interesting question है. Wow. Somebody read the question. Somebody मतलब Chris Sopti read करेगा ये question को. So I have a question in the 25th one. बोलो. Why is it 5 into 4 factorial? Why isn't it 5 into 7 into 6 into 5 into 4? Yeah, yes, sir. Yeah, In sir, that is wrong. 25th का second one. Actually, that should be the answer. I'm sorry. I'm sorry. That should be the answer, beta. Sir, I'll read. 5, 6, 8 minute. That's the answer. I'm sorry. Some number 29. Yeah, Krish. A mop license plate has 2 letters and then 4 numbers in it. How many plates 2 can be made letters without and एक 4 minute. numbers? And 4 numbers. Okay. आगे बोल. How many plates can be made without duplicating? There are no plates with number 0. Okay. So, what do you understand by this question? ऐसा बोला है कि letters यहाँ पे चाहिए, बराबर है? वो letters different होने चाहिए या same होने चाहिए? ऐसा कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है. So there are 26 into 26 options are there, बराबर ना? Yes, sir. Okay. Now, can you tell me what exactly they mean by this? यहाँ पे 4 numbers चाहिए. Okay. और इसमें How जीरो नहीं many? हो सकता. Zero नहीं तो First सिर्फ में 0 9 नहीं हो सकता. Okay. So you are over assuming the question. Question 9 says please. very clearly, followed by license plate की बात की है बेटा. License So plate में without 0 duplicating का है तो 26 into 25 होएगा ना. हम duplicate जीरो यूज ही नहीं कर सकते पूरे नंबर्स में लिखा है. नहीं ऐसा नहीं लिखा. आप ओवर एज्यूम कर रहे हो बेटा क्वेश्चन. देखा there are no plates with number 0. नहीं, लाइसेंस प्लेट हर एक वस्तु में ना 2 बार लगती है कम से कम. ओके. स्कूटर में आगे भी लगती है और एक पीछे भी लगती है. 2 लाइसेंस प्लेट. डुप्लीकेटिंग का मतलब कि भाई ये दोनों को 2 नहीं काउंट करने का, एक ही काउंट करने का. दैट्स द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेटिंग. ओके. इतना क्लियर हो गया? डुप्लीकेटिंग का मतलब एक व्हीकल में 2 बार लगती है, तो ये दोनों को अलग अलग मत काउंट करो सर, इसको एक ही काउंट करो. फेयर इनफ, अग्री. ये क्लियर हो गया डुप्लीकेटिंग का मतलब. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द. हाँ, उसके बाद बोला there are no plates with number 0. करेक्ट. सो वो आई एक्सप्लेन करता हूं. सो देयर इज अ लाइसेंस प्लेट विद द नंबर 0000 होता है क्या? मेरे ख्याल से इंडिया में तो ऐसा अलाउ नहीं किया है. ठीक है. सो दैट्स अ क्वेश्चन हियर that no license plate with the number 0 मतलब all 0 नहीं चलेगा, but you can have 0001 very nice number. अच्छा, उसका मतलब ये है. इसका मतलब ये है. तो ये थोड़ा मिसगाइडिंग, थोड़ा क्वेश्चन भी फॉर्म ऐसा बोल सकते हैं. तो इसको कैसे करेंगे बेटा? इसको आप करेंगे 10 10 10 10 minus all zeros 1. So that will be the answer there. Sir, can you explain the 0 part again? Okay, yeah. So, what do you mean by the question? The question says that you cannot have a license plate with all 0. ये नहीं चलेगा. This you don't want. But 0001 हाँ चलेगा. बहुत महंगा लाइसेंस प्लेट होता है. 0002 वो भी चलेगा. In fact 0007 भी बहुत महंगा. Understood. तो ये सब अलाउड है. So you have to remove the number plate with 0000. And which is only one number plate, right? Out of 10,000. ठीक है. So वो नंबर प्लेट मैंने निकाल दी.
Now, sum number 32, and that's the last sum which we are going to do. Okay. There are 3 candidates and 5 voters. 3 candidates and 5 voters. Okay. In how many ways the votes can be given if 3 candidates were among the 5 voters? अच्छा तो मतलब ये ऐसा हो गया, A, B, C, D और E वस्तु हो गई. ओके. सो वो कार वाला आंसर गलत है. कार वाला आंसर राइट रहेगा. Right. Book में no, in the I calculated right now in the book it's 6759324. Let me check. Yeah, I will 675. take out my calci. 26 into 26 multiply by 9. Sir, it matches with the answer behind the textbook. कितना है It आंसर बोलो? matches, sir. Sir, I think they have removed the 67 repeating lakh value. 59,324. कितना लाख से? हाँ सर यही आ रहा 67 है. lakh 59,324. Right, yeah. ये मेरा आंसर है. यही आया. Yes, sir. यही है पीछे. हाँ हाँ सर, सर, यही यही पीछे. यही है ना? यही सर. हाँ, Yes, sir. तेरे को कैल्सी यूज करने को नहीं आता. कौन बोला रे? अरे सर आप अभी देखो ना, आप 26 into 26 करो, लास्ट नंबर 6 रहेगा और फिर मल्टीप्लाइड बाय 0 आपका लास्ट डिजिट ये 4th नहीं रहेगा फिर भी. multiply by 999. 999. That's why. कौन है रे ये छोकरा? कहाँ से आया है? बाद में शाना भी बन रहा है. आई हैव यूज्ड कैल्सी. अच्छा ठीक है, चलो. सम नंबर 32 पे ध्यान देंगे. थोड़ा अच्छा सम दिख रहा है मेरे को. There are 3 candidates and 5 voters. Okay. And how many ways votes can be given if number 1, if 3 candidates were among the 5 voters and they vote for themselves. Okay. So there are 2 questions in this. Okay. So let me handle the second question first. If 3 voters, मतलब ये वोटर भी है और कैंडिडेट भी है, तो ये अपने आप को वोट देगा भाई, ये भी अपने आप को वोट देगा, ये भी अपने आप को वोट देगा. इसके लिए there are 3 options are there. और ये बंदे के लिए भी there are 3 options are there. So altogether this can be done in 9 ways. ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया. दिस इज सेकंड पार्ट. नाउ अभी ऐसा दिया है, वोटर 5 वोटर 1 2 3 4 and 5 and candidates are A, B and C. So this will give how many options? 5. सेकंड वाले के लिए 5, थर्ड वाले के लिए 5 नहीं, 3 3 3 3 and 3. All together 3:5 ways this can be done. First part में क्या था? First part, candidates were not voting. Only voters were voting. ठीक है, candidates were different. Okay. In the second part, candidates were amongst the voter. ठीक है. Okay. So altogether this will be 3:5, 243. And ये आएगा 9. Check कर लो जरा. In how many ways the vote can be given? Yes, sir. Yeah, that's Yes. see, So then see the let's go. first part में एक question mark. You see the question mark is there. How many ways the votes can be given? भाई तो ये आंसर फर्स्ट वाला आंसर है. This is the first answer and that's the second answer. Okay. Now kids, scary part अभी आ रहा है. मेरी बात सुनो. इसमें होमवर्क क्या दिया है मैंने? इज्जत से बोलो. ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर के लिए होमवर्क क्या दिया है मैंने? मैंने पहले 8.2 दिया था और 8.1 भी दिया था क्या? नहीं 8.1 नहीं दिया था. अच्छा ठीक है. तो ये और ये पूरा सॉल्व करके चाहिए मेरे को. सॉल्व दिस. ओके. एंड जानवी मिस को देना है. ओके. फोटो वोटो निकाल के दिया ना तब पढ़ जाएंगे. कन्वर्ट इनटू पीडीएफ. सॉल्व दिस, कन्वर्ट Cam scanner to PDF and then send it to Janvi Miss.
ठीक है, ये हो जाना चाहिए नेक्स्ट टेस्ट के टाइम पे. सो मंडे, बच्चा लोग बी वेरी हैप्पी. मंडे इज अ टेस्ट. मंडे इज द On टेस्ट, मतलब संडे को नहीं है. सर देयर इज नो टेस्ट ऑन संडे को संडे था देन. ना कि मंडे संडे को. को आई एम सॉरी, संडे को. अरे सर ऐसा एक्साइट करके फिर अरे ऐसा मंडे वापस को कर रखो ना. यू कैन कीप इट ऑन मंडे. हाँ तो सर मेरा, रखो ना आप अरे मंडे मेरा, को Yes, सर. sir. Be मेरा better क्लास if मिस it's हो on जाए. Monday. So अरे for तो मैम us, टेस्ट क्लास एक चला जाए. टेस्ट सुबह test को on लेके फिर Monday. आपका क्लास दे देंगे. Exactly, we have a test. We have कॉमर्स का Sunday टेस्ट है सर. test on Monday. और सर कॉमर्स का वेडनेसडे तो वी हैव पहला अ टेस्ट टेस्ट है. ऑन इंग्लिश. वी हैव अ Sir, टेस्ट. we have 3 tests in 1 week. Sir, they minus 3 tests in 1 week. We have two. ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चा लोग. ये वस्तु आपको करनी है. So ट्रिगो. So sir, can we this homework 8.2 and 8.3 we have to submit till when? मंडे. This also Monday. टेस्ट इज संडे है ना. सर वेंसडे ये का तो था ना सर. एक मिनट. व्हाई यू आर क्राइंग? यू मस्ट हैव सॉल्व दिस अर्लियर आल्सो. नो, एक दो डाउट रहेंगे, वो देखने के आपको. Yeah. ठीक है. न्यू बच्चे लोग, यू विल गेट द वर्कशीट राइट नाउ इटसेल्फ. so can you explain the 29th one again? I will explain everything again. Wait, 2 मिनट रुक जा. हाँ, कौन सा बेटा? 29th 29th. is a license plate ना. Yeah. What happened in 29th? चलो बोलो. I didn't understand this question. क्या नहीं समझा बेटा? 2 लेटर हैं, तो उसके लिए तो कितने ऑप्शन है? 26 है और 26 है, बराबर है. और उसके बाद बोला है नॉन जीरो लाइसेंस प्लेट. मतलब लाइसेंस प्लेट विल नॉट हैव ऑल नंबर 0, which will be 10 10 10 10 minus 1 without duplicating. So this is one license. This many different license plate. लेकिन ऐसे आगे लगने वाली भी होगी और पीछे लगने वाली भी रहेगी. You don't count this as a different. You count this as one only. So all together there are 26 square into 9999 will be the answer for different number of license plate will be there. So 999 na.